Good afternoon, sir. Am I audible to you? Yes. Hello. Yeah, you are audible. Yeah. Am I audible to you, sir? Yeah, absolutely, absolutely. Okay. Good afternoon, everyone. I, Apurva Project Officer, on behalf of City University, would take pleasure of welcoming Mr. Saurabh Trivedi, who is founding member, Venture Bold, Angel Investor Network, founder at Samadhan, and he is a passionate and well-respected leader with ability to define and drive business strategy, motivate teams aggressively, execute and analyze impact. He inspires and educates businessmen and businesses on how to leverage their innovative concept to stand out from the mass and gain traction. Legally advising to startup corporates innovators on various issues related to IPR, and his extensive experience in all aspects of IPR laws with special emphasis on filing prosecutions and enforcement of trademark, copyrights, and design. He also guides young entrepreneurs, startups, and early stage businesses to align process, resources, planning, and department goals with overall strategies. His expertise currently includes fundraise, incubation centers support, entrepreneurship building, consulting to universities, incubation centers, and improving brainstorming process of startups. And with his expertise and more than a decades of his corporate experience and knowledge, he invested in a couple of startups. Without any further delay, I hand over this session to you, sir. Thank you, Apurva, for this wonderful introduction. So, and thank you, CT University, for organizing this expert talk on the topic of accelerator in being a first generation entrepreneur, and no one knows about in my family what exactly this business and how exactly you are going to become an entrepreneur. So there are lots of things, and when I am going to discuss this with the students, faculties, or a budding entrepreneurs who wish to do something on their own. First of all, जब भी हम बात करते हैं हमें कुछ करना है, okay, it's not about like going to join a company, मुझे एक जॉब करनी है, ठीक है, or maybe I am going to do something on my own, which is known as an startup. Nowadays it is known as a startup, otherwise it is a traditional businesses which you formally take up from your parents, or you wanted to start that. So आज जब भी हम जर्नी की बात करते हैं या एक स्टूडेंट की और स्टार्टअप, तो आई थिंक like nowadays we see कि स्टार्टअप्स एवरीवेयर देयर इज टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप्स. ये स्टार्टअप्स है क्या, और ये स्टार्टअप्स कैसे मेरे को हेल्प करने वाले, और मैं कैसे अपना स्टार्टअप करने वाला हूँ. और देयर आर सम की स्टेक होल्डर्स विच यू नेम्ड एज incubation center, acceleration centers, or you can say lots of other stakeholders in the ecosystem who is supporting this startup spirit. Okay, so in terms of students, when they are in a college campus, so they don't know about this like entrepreneurship, how exactly this entrepreneurship look like. So I'm going to share some of the slides which is related to the entrepreneurship, and then probably we are discussing or going to exchange it informally. Business undertaking, assuming the risk for the sake of profit. ये वो डेफिनेशन है जो हमें ना हर बार whenever we are going to study business studies की बात करें या कहीं पर भी हम मैनेजमेंट की बात करें, वहां पर ये चीजें ऑलरेडी मेंशन है. बट when you are going to start a real entrepreneurship, वहां पर हमारे साथ बहुत सारी चीजें आती हैं कि जहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये स्किल्स क्या क्या चाहिए होते हैं हमें entrepreneurship स्टार्ट करने के लिए, ये जर्नी कैसे स्टार्ट होगी. We are definitely going to talk about the incubation और acceleration centers जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं हमारी इस जर्नी में. ठीक है, अब जब स्किल्स की बात आती है, क्या स्किल्स चाहिए होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन स्किल्स विच इज प्राइमरी रिक्वायर्ड. इफ
a student or a budding entrepreneur not able to communicate properly, what things they required, how exactly they are going to do this concept of entrepreneurship, तब तक वो आगे ग्रो नहीं करता है. So the first skill which is pretty much required is a communication skills. Another, human relation skills, which is already like required to handle people. आप जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपना को फाउंडर ज्वाइन करवाते हो या आप किसी भी एम्प्लॉय को हायर करते हो, और इफ यू मे बी कनेक्टिंग विद वेंडर्स और एनी आउटसोर्स पार्टी, या आप अपनी मीटिंग्स करते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ के साथ, किसी भी सीएफओ के साथ, सो दीज काइंड ऑफ स्किल्स यू प्रीटी मच रिक्वायर्ड. Problem solving and decision making skills, this is something at last they required it on urgent basis. जब एक entrepreneur बनने की शुरुआत कर रहे होते हैं, तो ये जब skills उनके अंदर आ जाते हैं, then they think of to start their entrepreneurial journey. और ये problem solving और decision making skills क्या है? Whenever something is came to you as a problem, you as an entrepreneur, you can think a good solution out of this. और जब आप ये सोच, बिकॉज इट्स योर बेबी, आप बिजनेस आपका है वो, एंड ये आपको शुरू करना है, तो आपके पास ये डिसीजन मेकिंग स्किल होना चाहिए, आपके पास सॉल्यूशंस होने चाहिए, आप किसी को गाइड कर पाओ. और जब आपके पास ये सब हो जाते हैं, देन यू थिंक ऑफ टू स्टार्ट ऑन योर ओन बेसिक बिजनेस स्किल्स, विच इज निटी ग्रिटीज लाइक कंप्लायंसेस, आईपी, एमओए क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, यू शुड अवेयर ऑफ दीज स्किल्स एज वेल. Then starting a business, starting an entrepreneurial voice has always been intimidating. ये आसान नहीं है, कभी ups, कभी downs, और कभी कभी ना, मतलब whenever a student thinks of to start on their own concept or startup, they think of the first thing as an finance, कि हमें फंड चाहिए, सिर्फ उसी पे बात होती है. I never hear that they are going to done their homework first. Homework means do a research properly, कि आप कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करने वाले. ठीक है, मैं अभी ना एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहा हूं, मैं स्टार्टअप्स की बात कर रहा हूं. देन आई एम गोइंग टू लेट यू नो अबाउट द रोल्स ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर, एक्सेलरेशन सेंटर, हु इज सपोर्टिंग इन योर जर्नी. और जैसे ही आपकी जर्नी बढ़ती चली जाती है, या आप समझ जाते हो कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, आपका बिजनेस प्लान अच्छा है, आपको फंड मिल सकता है, और यू कैन मेक इट एज एन यूनिकॉर्न और डेकाकॉन, दैट समथिंग यू कैन डिसाइड. But this is a risk-taking business. There is no guarantee of achievement. There is no real way where you can prepare for a future, any uncertainties. Regardless of the difficulties, seeking professional advice, guidance is always rewarding, which is primarily known as mentorship, advisors on the board of a startup. और ये सब ना, ये बहुत इंटरकनेक्टेड है. इंक्यूबेशन सेंटर और एक्सेलरेशन सेंटर्स जो सपोर्ट आपको देते हैं, या वो रोल प्ले करते हैं इस इकोसिस्टम के अंदर. दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स, आइडिया जनरेशन. सॉरी, आइडिया कहां से लाएं? यू लेट अस नो द आइडिया एंड वी आर गोइंग टू मेक अ कॉन्सेप्ट. हमें बताओ कौन सा स्टार्टअप बहुत बड़ा होने वाला है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आइडिया जनरेशन की बात आती है स्टूडेंट्स में, ठीक है, तो उनके हॉबीज और स्किल्स से वो जनरेट कर सकते हैं अपने आइडिया को, कि किस कॉन्सेप्ट के ऊपर उन्हें काम करना है. And I'm going to talk about the faculties as well. When they think of to support, जहां पर उन्हें इस एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करना है और लर्न करना है कि एंटरप्रेन्योरशिप होती कैसी है, ठीक है, तो उनको भी इक्विवेलेंट ही अपना रोल प्ले करना होता है एज अ मेंटोर, एज अ एडवाइजर. यू ऑल नो अबाउट कि हमारा जो पहला गुरु है वो हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर है, हमारी फैकल्टीज है. एंड फैकल्टीज नो दैट टू ब्रिंग आर टेक्नोलॉजी, टू ब्रिंग आर रिसर्च out from this university across the world, student or the startups are really going to help us. तो जहां पर ये दोनों चीजें मैच करती है, फैकल्टीज की बहुत अच्छी रिसर्च और उनके एडवाइजेस जो आपको वो देते हैं कि आपको कैसे स्टार्टअप में क्या क्या चीजें और इन्वॉल्व करनी है. I'm not saying they do have a hands-on expertise on the industry side, but yes, they do have expertise on the research side, particularly technology side. और वो बहुत अच्छा करते हैं वो लोग. तो आपको ना एक मेंटोर एडवाइजर मिल जाता है, विच प्राइमरी अ रोल ऑफ एन इंक्यूबेटर और एक्सीलरेशन सेंटर्स, जो प्राइमरी आपको इनका सपोर्ट देते हैं. तो जब आप आइडिया जनरेट कर रहे होते हो, यू मे बी जनरेट दैट आइडिया फ्रॉम योर हॉबीज और स्किल,
आप वहां से ले सकते हैं अपने आइडिया को कि ये वाला एक सॉल्यूशन है जिसपे मैं काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अनदर थिंग, कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स, एब्सोल्युटली। आपको दिख रहा है कि मे बी यू कैन डू सम काइंड ऑफ चेक कि हमारी यूनिवर्सिटीज में क्या क्या चीजों की डिमांड है, मतलब क्या क्या चीज है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट ओनली योर यूनिवर्सिटी, या कहां पर और सारी यूनिवर्सिटीज में 29,000 आई थिंक दिस इज अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ द यूनिवर्सिटीज। So probably if they are your targets, then you identify a right problem कि कहां पर कितनी नीड्स है और क्या मैं उनकी नीड्स को सफाइज कर सकता हूं अपने इस कॉन्सेप्ट से, अपने इस स्टार्टअप से। You can take that idea as a startup. Another thing, conduct surveys and questionnaires. If you think आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रही है और मे बी यू कैन जस्ट ट्राई टू अ रैंडम कि वी जस्ट वांटेड टू हैव सम सॉल्यूशंस और ये सॉल्यूशन काम करेगा या नहीं करेगा, आप कंडक्ट कर सकते हो सर्वेस और क्वेश्चनियर्स अपने यूनिवर्सिटीज में। एंड दिस इज द राइट प्लेस वी आर सिटिंग नाउ। और यहीं पे आपको ना, आपकी जब चेकलिस्ट की बात करता हूं, एक स्टार्टअप को, जब स्टार्टअप मतलब एक स्टूडेंट, अ बडिंग एंटरप्रेन्योर हु विश टू डू समथिंग ऑन देयर ओन, तो जब वो यूनिवर्सिटी में होता है उसको बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। मे बी यू नो अबाउट और हियर्ड अबाउट ई सेल, entrepreneurship cell, EDCs, which is primarily a student communities who's working towards this entrepreneurship. ये एक छोटा वर्जन है जब आप इंक्यूबेशन सेंटर्स देखते हो और एक्सेलेरेशन सेंटर्स को देखते हो। बट सब कुछ स्टार्ट है आपके बिजनेस आइडिया से, आपका स्टार्टअप के व्हाट एग्जैक्टली यू थिंक और हाउ पैशनेट अबाउट दिस स्टार्ट और एंटरप्रेन्योरशिप। सो सब कुछ करना आपने ही है। Consumer needs and wants, watch them, talk to them, ask them about their problems, what type of solutions they think they will address those problems. Yes, you don't have to reinvent the idea. और आपको जरूरत नहीं है। McDonald's did not invent hamburgers. Starbucks did not invent coffee. Instead, they pursued markets which already exist and did everything. So if you think that the concept is already into the market, identify these opportunities and probably then you think of कि अब हम इसके अंदर क्या added versions डाल सकते हैं, and then you can do your startup. Now, research. This is first step when I'm saying कभी भी स्टूडेंट्स कैसे स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं और सबसे पहले उनकी चेकलिस्ट क्या हो सकती है। सो दिस इज समथिंग दे कैन डू, और दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट यार। यू डोंट नीड टू डू इट बाय पेइंग और स्पेंड सम मनीज फॉर डूइंग दिस रिसर्च। आप जैसे ही अपने आइडिया को सोचते हो एंड उसके ऊपर रिसर्च करते हो, वैलिडेट करते हो अपने आइडिया को, मे बी ब्रेनस्टॉर्म इंटरनली, आप आपस में बात करते हो, आप अपनी फैकल्टीज को इंटरेक्ट करते हो, then inputs from experts, like today we do have this session, maybe another session is on the compliance, maybe another session is on IP, maybe something in terms of MVP, business model canvassing or anything। वहां से आप इनपुट्स ले सकते हो एक्सपर्ट से अपने बिजनेस आइडिया को वैलिडेट करने के लिए। इनफॉर्मल इंटरव्यूज, रिव्यू एंड देन डिसाइड दैट इट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। अब नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द इंक्यूबेशन सेंटर्स और एक्सीलेशन सेंटर्स, यहाँ पे ना एक एक छोटा सा, बहुत बहुत छोटा सा डिफरेंस आता है। इंक्यूबेशन सेंटर होता क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं इंक्यूबेशन सेंटर करता क्या है, जब आप आपने एक बर्ड को देखा होगा, एक बर्ड जब भी एग करता है तो एग हैच करने के बाद वो वेट करता है कि वो उसके बाद एक यंग एक ब्रीड बन के बाहर आए, तब तक वो उसे इंक्यूबेट करता है। ठीक है, वो जो सपोर्ट होता है कि उसे उस एग से बाहर आने के लिए कि एटलीस्ट दे जस्ट वांटेड टू टेक अ प्रेशर, उसे क्या समझना चाहिए और उसे एक यंग जनरेशन में बदलना, दैट इज द वर्क ऑफ एन इंक्यूबेशन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दीज इंक्यूबेशन सेंटर्स, दे आर सपोर्टिंग यू इन एवरी रिक्वायरमेंट ऑफ योर्स। ठीक है, और जब हम बात करते हैं प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स की, जहां पर आपको कुछ नहीं पता, आपको सिर्फ एक एक्सपर्ट सेशन ले रहे हो, बट यू डू हैव अ पैशन टू डू एंटरप्रेन्योरशिप और आपको अपना स्टार्टअप करना है, एंड फैकल्टीज आर आल्सो इंक्लूड इन द सेम, कि हमें समझना है कि एंटरप्रेन्योरशिप में व्हाट एग्जैक्टली द रिक्वायरमेंट्स। सपोज यू डू हैव अ वंडरफुल फैकल्टी एट योर प्लेस और वो आपको एक रिसर्च दे सकती है, एंड यू डू हैव अ वंडरफुल आइडिया around that research,
आप दोनों मिलके काम कर रहे हो, आपने एक रिसर्च एक आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज द राइट कॉन्सेप्ट, फैकल्टीज आपको सपोर्ट कर रही है, फैकल्टीज शुड अंडरस्टैंड कि वो ये रिसर्च जब आपको दे रहे हैं, वो जब आपको मेंटोरशिप दे रहे हैं, उसके बदले में उन्हें क्या मिलेगा, हाउ एग्जैक्टली दे आर गोइंग टू हेल्प इन दिस स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम में, वो क्या सपोर्ट करेंगे. So again, this is very beneficial for the faculties, students to understand and the roles of this incubation or acceleration centers. आपको क्या मिलता है? First of all, a guidance to make your business plan, to validate your business idea. ये सब incubation center से शुरू होता है आपके पास. They run a various cohorts कि आपको 3 महीने और incubation center ना जब cohorts run करता है, so they primarily in a long duration कि 6 महीने से लेके 24 महीने तक एक प्रोग्राम रन करेंगे. एंड इन दैट प्रोग्राम यू आर गोइंग टू एनरोल योरसेल्फ एज एन स्टार्टअप और अ बडिंग एंटरप्रेन्योर. वहां पर आपको नेटवर्किंग मिलेगी, आपको फंडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बट इंक्यूबेशन सेंटर इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू दैट फंड. दे आर गोइंग टू मे बी प्रोबेबली अ सीड फंड जस्ट टू लाइक टेक अहेड एज एन कि आपका ये आइडिया वैलिडेशन में है एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट योर कॉन्सेप्ट. वो आपको मिल सकता है इंक्यूबेशन सेंटर में. आपको मेंटोरशिप मिल सकती है, आपको एडवाइजरी मिलेगा, आपको स्पेस मिलेगा इंक्यूबेशन सेंटर में. ऑल द थिंग्स विच यू रिक्वायर्ड आपको इंक्यूबेशन सेंटर से सारा सपोर्ट मिलता है. एंड मे बी प्रोबेबली यू आर नॉट नो अबाउट द प्रोसेसेस ऑफ ग्रांट्स, वो प्रोसेस भी आपको इंक्यूबेशन सेंटर में मिलते हैं. अब नाउ देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन इंक्यूबेशन सेंटर एक्सीलरेशन सेंटर्स. इंक्यूबेशन सेंटर प्राइमरी टेकिंग अर्ली स्टेज बिजनेसेस जो अभी एमवीपी तक भी नहीं पहुंचे हैं, बहुत अर्ली हैं, दे आर इन द बिजनेस आइडिया. वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको समझाएंगे, वो एक्सपर्ट सेशंस देंगे. एंड देन यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क. और जब आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते हो एंड देन यू आर गोइंग टू लॉन्च योर एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, एंड यू थिंक ऑफ टू एक्सेलरेट, नाउ मुझे जर्नी स्टार्ट करनी है, देन एक्सेलरेशन सेंटर इज गोइंग टू हेल्प यू आउट. अब एक्सेलरेशन सेंटर्स का रोल जो है वो है आपको एक्सेलरेट करना, और वो भी एमवीपी के बाद. और ये बहुत छोटे टर्म के लिए कोहर्ट्स रन करते हैं. आई रन सेवरल कोहर्ट्स, मैंने बहुत सारे कोहर्ट्स रन किए एक्सेलरेशन सेंटर्स के साथ मिलकर. प्राइमरली दे आर फ्रॉम 3 months to 6 months और 9 months प्रोबेबली इन द ड्यूरेशन, बट इससे ज्यादा बड़े कोहर्ट्स एक्सेलरेशन सेंटर रन नहीं करता है. एंड दे प्राइमरली टेक सम ऑफ स्टेक्स इन योर बिजनेस, इन योर स्टार्टअप. और वो छोटा सा स्टेक लेने के बाद दे सपोर्ट यू इन ईच एंड एवरी रिसोर्स यू नीडेड टू एक्सेलरेट योर बिजनेस. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंक्यूबेशन सेंटर्स और एक्सेलरेशन सेंटर्स, बिकॉज स्टार्टअप या बडिंग एंटरप्रेन्योर जिसे कुछ नहीं पता है, दे आर ऑल्सो फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रहे हैं, दे आर जस्ट नो अबाउट दिस स्टार्टअप टर्म सुना हुआ है उन्होंने, and they are not aware where to head. Then now another important part, make a plan. This is again a requirement from a startup. क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज पे बात करता हूं कि ये आपका बेबी है, ये कॉन्सेप्ट आपका है. यू नीड अ सॉलिड प्लान टू सो एज टू मेक योर बिजनेस आइडिया रियलिटी. और ये सब कहां से चेक होता है? आप जब अपने इंक्यूबेशन सेंटर से एडवाइस देते हो, वहां पर बात करते हो, वहां मेंटोर्स मिलते हैं, एडवाइजर्स मिलते हैं, और प्रोबेबली द फैकल्टीज they are going to become an mentors, and maybe probably they are not able to join as a director because of their contractual obligations, but yes, they can become a shareholders by taking the equities and supporting you in completing your business concepts. And this is a basic essence required. Make a plan. A business plan is a visual representation that will help you manage your business from the startup stage through the establishment and gradual growth. It is an absolute necessity for every new business. और ये प्लान आपने बनाना है. डोंट थिंक कि जो मेंटोर एडवाइजर जिसे हमने ज्वाइन कराया है, हमने सब कुछ उसको कह दिया है कि आप ही प्लान बना के दो. No, it's not their job. They are going to guide you, but you should make your plan. Purpose of this plan: obtaining finance,
which is prime focus. मतलब nowadays whenever I talk with the startups or entrepreneurs, उनका पहला मोटिव ये होता है कि हमें तो सिर्फ फंड चाहिए, उस फंड के बिना हम कुछ कर नहीं पाएंगे. और इस पर्पस के लिए भी आपको बिजनेस प्लान सबमिट करता हूं. बैंक्स एंड पोटेंशियल लेंडर्स रिक्वायर योर बिजनेस प्लान, हेल्प्स ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डेटा क्रिटिकल टू न्यू बिजनेस, provides an outline to follow when starting a business. So this is जहां पर आप ना एक डेडिकेटेड माइलस्टोन डिसाइड करते हैं कि अगले 3 महीने में मैं क्या करने वाला हूं, 6 महीने में क्या करूंगा, 9 महीने में क्या होने वाला है और 12 महीने में क्या होगा. Then this business plan gives you all insights. और ये बनाना कहाँ है आपको, जब हर चीज आपके दिमाग में हो. Again, it's come from your intellectual mind and it's your business plan. Essentials of the business plan: executive summary, product service plan, management team plan, industry, market analysis, operational plan, organization plan, marketing plan, growth plan, financial plan. These all should include in your business plan. And the support which you required is going to come from the incubation center. And you see that there are lots of incubation centers who is going to give. मैं बार बार अगेन कह रहा हूं कि प्री कोहर्ट्स लॉन्च होते हैं जहां पर अभी आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन भी नहीं करनी है, बट यस यू शुड प्रिपेयर योर बिजनेस प्लान. एंड जहां ग्रांट्स की बात आती है, अगर मैं यूनिवर्सिटीज के नाम लूं या आप कॉम्पिटिशन्स की बात देखो, हर जगह ग्रांट्स अवेलेबल है. 5 लाख रुपए मिनिमम ग्रांट्स किसी को भी एक बिजनेस प्लान के लिए मिल सकते हैं. बट यस, देयर आर सम सेंस इन योर बिजनेस प्लान. और अगेन ये हेल्प आपको मिलती है इंक्यूबेशन सेंटर से. तो स्टूडेंट्स, फैकल्टीज जिन्हें लर्न करनी है एंटरप्रेन्योरशिप और समझना है कि हम कहां पर सपोर्ट कर रहे हैं, they can be a part of this incubation center as a mentor, as an advisor. Or students who just think of to do something on their own and willing to start their startup, वो incubation centers join कर सकते हैं. I think every university do have their own incubation center, private incubation center, government incubation centers, just to nourish your idea. But business plan should yours, concept should yours, and again it's novel, newness चाहिए, idea में दम होना चाहिए, industrial applicable होना चाहिए. That is something a requirement. और आपको ना इसका एक और एजेंडा या आप ये को अदर एंगल समझ आना चाहिए. इफ यू आर सो इनोवेटिव और क्रिएटिव, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट माइंडसेट. आपको नहीं लगता कि आप स्टार्टअप शुरू करने वाले हो, बट यस, इफ यू डू हैव अ क्रिएटिव माइंड, एंड अगेन देयर इज अ वन एलिमेंट व्हिच इज नोन एज एन आईपी. अगर आपने पेटेंट्स फाइल कर दिया एंड यू थिंक ऑफ दैट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सिट इन अ कैंपस प्लेसमेंट, मैं आपको अगेन एंटरप्रेन्योरशिप बता रहा हूं बट इन अ डिफरेंट एंगल, और आप किसी कैंपस प्लेसमेंट में बैठते हो एंड देन दे अंडरस्टैंड दैट यू डू हैव एन इनोवेटिव माइंड, you are ready to make a new solutions, you are able to identify problem or match making that solutions and identify vendors or anything, then you are ahead from others in those job interviews. So ये incubation centers खाली आपको स्टार्टअप ही प्रमोट करने को नहीं सिखाता, बट they are going to nourish everything which is required by seeing as an entrepreneurship. आपको research obviously you require, business plan absolutely you require, because maybe this is a requirement of a business. maybe आप किसी स्टार्टअप को ज्वाइन कर रहे हो, so you should know about this all nitty gritties. And if not, then probably the incubation centers, acceleration center, जहां पर आपको जिस स्टेज पे आप लोग हैं वहां पर आपको ज्वाइन कराते हैं as an incubator, as a growth stage startup, and then you are going to raise the funds and then take your journey ahead. मैं बहुत बात करता हूं इसके ऊपर कि ये एंटरप्रेन्योरशिप है क्या. इट्स नॉट एन इजी जर्नी. 8 साल, 10 साल, 12 साल लग जाते हैं किसी को एक स्टार्टअप लॉन्च करने के लिए. In terms of my understanding, I think probably you should learn a lot, and I think मेरे टाइम पे ये incubation centers थे नहीं. Otherwise, I should learn before
दिस टाइम पीरियड, मैं इससे पहले ये चीजें सीख चुका होता एंड प्रोबेबली अपना स्टार्टअप शुरू कर चुका होता। एंड ये मुझे सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि मेरे को ये इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप्स देते हैं, बट यस आई रिलाई ऑन देम टू परफॉर्म एवरी वर्क विच इज रिक्वायर्ड बाय एन इन्वेस्टर। एक इन्वेस्टर क्या देखता है? एक रेडीनेस देखता है किसी भी स्टार्टअप के अंदर, एंड दैट इज अ कोर जॉब ऑफ एन इंक्यूबेशन सेंटर टू नरिश दैट स्टार्टअप टू दैट लेवल वेयर दे आर गोइंग टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द इन्वेस्टर्स। आपका सारा ड्यू डिलीजेंस, आपको आप कितना पैशनेट है अबाउट दिस आइडिया, कितने सीरियस हैं इस आइडिया को लेके, दैट ऑल शुड लर्न फ्रॉम दिस इंक्यूबेशन सेंटर्स। एंड यू आर सो लकी इफ यू डू हैव और यू आइडेंटिफाई दिस इन योर यूनिवर्सिटी। आप एक बार जाके तो देखो, अंडरस्टैंड तो करो ये स्टार्टअप होता क्या है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, और ये इंक्यूबेशन सेंटर मुझे क्या दे रहा है। And sometimes they available at free of cost. They are not going to charge you to sit even on that space. आप कितने भी बड़े स्टार्टअप्स देख लो, पेटीएम देख लो, ओयो देख लो, या कोई भी स्टार्टअप देख लो, they already spent a good time. They need a team just to pursue their ideas. और ये सब कुछ हमें इंक्यूबेशन सेंटर से मिलता है। मैं बार बार एक ही चीज बता रहा हूं बिकॉज आज का सेशन ही हमारा इंक्यूबेशन सेंटर और एक्सीलरेशन सेंटर का है कि हमारे पास क्या क्या बेनिफिट्स आ सकते हैं। And if we are not going to think of this entrepreneurship, that's your choice, completely your choice. You don't wish to become an entrepreneur, मत बनो, कोई बात नहीं। But only thing is expecting that incubation center or from the key stakeholders of the ecosystem who is going to support the persons। और आप अगर ये देखोगे ना, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में बहुत प्रॉब्लम है। पीपल वांट टू स्टार्ट दिस एंटरप्रेन्योरशिप, बट उन्हें ना बहुत तरीके के ये सपोर्ट नहीं मिल पाता, and they are looking for incubation centers in tier 1 or near to their places. I'm being a part of more than 35 incubation centers, and मैंने वहां पर स्टार्टअप्स को देखा है कि दे आर फीलिंग कि हमें और नॉलेज चाहिए, हमें एक्सपर्ट सेशंस चाहिए, वी आर लैकिंग इन दिस कंप्लायंस पार्ट, लीगल पार्ट, बिजनेस प्लान नहीं बन पा रहा है, ये बिजनेस मॉडल कैनवसिंग होती क्या है, टर्म्स क्या होते हैं, एसएचए। So incubation center provide all these things to you as an early stage entrepreneur. This is a finance slide. Identify potential investor when you think of to like अब फाइनेंस अटक गया है, अब मेरे को सीड फंड रेज कर चुका हूं, मुझे प्री सीड रेज करना था, मेरे को नेक्स्ट लेवल की फंडिंग चाहिए थी, then you should identify the potential investors. Example, family and friends, other businesses, contact financial agencies for loan, grants and financial assistance. This you should do that. And जब आप incubation center और acceleration centers के पास जाते हो ना, did you have a full-fledged list of investors ready with them? Angels who are going to support in your idea, और हाउ यू आर गोइंग टू, कितना डाइल्यूट करनी है, क्या परसेंटेज होती है, कैसे मैं आईपीओ तक पहुंच पाऊंगा, सीरीज ए सीरीज बी की फंडिंग मैं, दिस इज प्राइमरी अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल विच दे आर प्लेइंग फॉर दिस ecosystem to support these startups. Or not only for the startup, students wish to learn something, they can join that. Faculties learn to do that, please join that. And then you should pursue this entrepreneurship. Yes, इस entrepreneurship में कुछ है।
So whenever we talk about, and today's, I think we are going to talk on this incubation, acceleration centers, startup, student, faculties. They all are important key stakeholders of the ecosystem. And everyone's role is really important. Being an investor, I particularly rely on the incubation centers for good startups, because there I identify seriousness of startups or budding entrepreneurs. मैंने कई बार देखे, स्टूडेंट्स केम टू मी एंड से दैट सर हम ई सेल का प्रेसिडेंट हैं, हमने ये किया है वो किया है, बट व्हेन इट कम्स टू ज्वाइनिंग ऑफ इन एनी इंक्यूबेशन सेंटर, और मैं जब भी बात करता हूँ कि प्लीज गो एंड लर्न अबाउट दिस all nitty-gritties of the business in incubation center, then they say no sir, we require only funds. A biggest example, Micromax यार, आप देख लो, एक इतना अच्छा बिजनेस, 5 साल तक इतना अच्छा बिजनेस ग्रो करा, और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में इंपॉर्टेंट था, वो था आईपी, वो मिस कर गया. एंड nowadays you are not able to see any mobile phone of Micromax. तो इसलिए मैं जब भी बात कर रहा हूं, मैं सारे चेकलिस्ट की बात कर रहा हूं. व्हेन यू स्टार्टेड योर स्टार्टअप, then you do particular research. First important, quantitative, qualitative, whatever form you are going to prove it, you can do that research, or it's free of cost. Second, identify your co-founder, और वो भी आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में ही आइडेंटिफाई कर सकते हो. एंड को-फाउंडर ऐसा नहीं होना चाहिए कि I'm from a technical background and he is also from a technical background. Always think of to take someone who do have a complementary skills. टेक्नोलॉजी तो मेरे को आती है बनानी, मुझे मार्केटिंग नहीं आती, मुझे एचआर नहीं आता, मुझे ऑपरेशंस नहीं आता. आई एम गोइंग टू आस्क फॉर समवन टू जॉइन इन दिस आइडिया, इन दिस कॉन्सेप्ट. वो को-फाउंडर आइडेंटिफाई करना. देन थर्ड, मेक अ बिजनेस प्लान, और इस बिजनेस प्लान को वैलिडेट कराओ द फोर्थ पर्सन हु इज गोइंग टू बिकम योर मेंटोर, एडवाइजर. ये कौन होगा? मे बी योर फैकल्टीज, मे बी योर गुरुज, और मे बी यू आर गोइंग टू टेक इट फ्रॉम एनी इंक्यूबेशन सेंटर. वो वैलिडेट करेंगे, यस दिस इज राइट बिजनेस प्लान. देन एक बिजनेस को इसके बाद क्या चाहिए? आपको स्पेस चाहिए, विच अगेन प्रोवाइडिंग बाय द इंक्यूबेशन सेंटर और एक्सीलरेशन सेंटर. और कोविड के टाइम के बाद से मुझे नहीं लग रहा, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन ऑनलाइन, और बहुत इजीली कम्युनिकेट हो पा रही है. सो स्पेस की प्रॉब्लम भी सॉल्व. यू नीड रिसोर्सेस, नेटवर्किंग, इन्वेस्टर्स, मेंटर्स ग्रुप, सब कुछ इंक्यूबेशन सेंटर के पास है. और अभी तक भी ना, ये जितने भी चेकलिस्ट के पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, मेंटोर, एडवाइजर तक भी, अभी तक भी आप कोई पैसे नहीं खर्च कर रहे हो. और आपका सबसे लास्ट स्टेप होना चाहिए जस्ट टू रजिस्टर योर कंपनी. मैं लास्ट स्टेप बता रहा हूं. जब आप ये वैलिडेशन कर सकते हो, ये बिजनेस प्लान वर्क करेगा, मेंटोर आइडेंटिफाई कर चुका है, मेंटोर ने कहा यस इट इज गोइंग टू बी वर्क, आपने अपनी आईपीस को प्रोटेक्ट कर लिया, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, व्हाटएवर यू रिक्वायर्ड, लीगैलिटी, कॉम्प्लायंसेस आपने अंडरस्टैंड करने शुरू कर दिए, देन यू आर गोइंग टू लॉन्च योर स्टार्टअप. इट्स नॉट अबाउट कि अगले दिन ई सेल में सुना और किसी ने कहा कि स्टार्टअप बना लो, तो हमने स्टार्टअप बना लिया. एंड ये सारी निटी-ग्रिटीज कंप्लीट करने के बाद यू आर गोइंग टू लॉन्च एंड स्पेंड द मनी ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ योर कंपनी. देन वहां पर आपके पास आएगा पॉइंट कि स्टार्टअप का सर्टिफिकेट चाहिए आपको. सो अगेन इंक्यूबेशन सेंटर इज गोइंग टू हेल्प यू आउट. आपको ये सारे कनेक्ट, जितने भी डॉट्स है ना इस इकोसिस्टम के, इंक्यूबेशन सेंटर और एक्सीलरेशन सेंटर्स, ये आपको बहुत इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं. और आपको ना एक ही प्लेस पे सब कुछ मिलता है. And even you heard about some demo days, which is primarily for raising a fund. That is again in what do you say, roles for the incubation centers.
So that's it from my end, and I am opening this platform for Q&A, or maybe if you have written it in the chat box, probably I'm going to ask from the organizers. If you do have any queries related to this startup, entrepreneurship, incubation center, any faculties do have any queries related to this entrepreneurship, I'm happy to answer. So open this platform for Q&A, but please write it in the chat box so that I can answer that. I'm just stopping my screen. I'm saying there are very, very less participant now. I don't know. Like maybe they are not liking the entrepreneurship, or they don't have any passion about this entrepreneurship. But over to you, Apurva, or organizers team. If any query came from students, faculties, I'm happy to answer that. What you find most challenging about being an entrepreneur? It's really difficult to identify your co-founder. This is the first challenge. आइडिया तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू सी, रिसर्च आपको मिल जाती है, आप अपने हॉबीज को परस्यू कर लेते हो, बट आपका को फाउंडर आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि सेम पैशन वाला. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मेंटोर और एडवाइजर, वो बहुत डिफिकल्ट है. ये दोनों चीजें अगर आपको मिलती हैं, आपको ये सपोर्ट मिल जाता है, देन प्रोबेबली यू आर गोइंग टू मेक अ गुड स्टार्टअप. अपना कॉन्सेप्ट लॉन्च कर सकते हो. And when I started my journey of this entrepreneurship, I learned a lot from people. मेरे जितने भी what you can say probably leaders रहे, जितने भी बॉस रहे हैं मेरे, मैंने सबसे बहुत कुछ सीखा है. Because learning is essential and very important. जैसे ही आप लर्न कर जाते हो, then you can remove well and you are going to start earning. But it's important to identify right co-founder जो आपके साथ चल सके, जो आपको कॉम्प्लीमेंट कर सके, आपके आइडिया को अपने तरीके से समझ सके. एंड देन अ गुरु विच प्राइमली कम फ्रॉम एन यूनिवर्सिटीज एंड कि जहां पर मैं पढ़ रहा हूं, वो बहुत डिफिकल्ट है. और बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आई थिंक दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब. और इंक्यूबेशन सेंटर्स मुझे सपोर्ट करते हैं इन सब एक्टिविटीज और इन चैलेंज को फुलफिल करने में. Any more questions? And even people think of कि students और faculties के लिए क्या है इस this entrepreneurship में. So मैं कई बार बता देता हूँ बहुत easy way में कि बहुत जगहों पे ये businesses चलते हैं जहां पर वो students के group और faculties को invite करते हैं just to launch your idea, just to share your concept with us, and we are going to do particularly support you on that grants or something like that. Wow, market research is very important for early stage. How can we conduct this effectively? There are lots of way. जब भी हम market research की बात करते हैं, qualitative, quantitative, these already written into the what you can business studies की books में है, management की books में, ठीक है. मुझे जहां तक समझ में आता है, we should take the help from Google because सारी information हमारे पास है. And effectiveness की बात जब भी करते हैं, पहले पेज पे ना हम लोग क्या करते हैं, जब भी अपने कीवर्ड्स को, अपने कॉन्सेप्ट को सर्च करते हैं या अपने कंपटीशन को सर्च करते हैं गूगल पे, ठीक है, कि वो लोग कैसे वर्क कर रहे हैं, उनका बिजनेस प्लान क्या है. बट वी स्टक ओनली ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द गूगल और सेकंड पेज और थर्ड पेज, बट नॉट बियॉन्ड दोज पेजेस वी सर्च दैट कंप्लीटली. हम 3 पेज पे, 4 पेज पे आकर रुक जाते हैं, हम रिसर्च को छोड़ देते हैं वहां पे. और मेरे को जहां तक लगता है कि एक अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर को कंप्लीट करना चाहिए कम से कम 10 पेज, 11 पेज, 12 पेज, जहां तक, जब तक उसकी ये
रिसर्च कंप्लीट नहीं हो जाती और मे बी दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दी माय कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप, और उनको वो क्यों बंद हो गए, वो क्यों नहीं स्टार्ट कर पा रहे, वो क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे। अगर ये रिसर्च के पैरामीटर्स को रखते हुए इफ दे कैन डू दिस रिसर्च ऑन गूगल till the 10th page of the Google, it's easy, it's effective. Another thing, when you are performing the surveys, questionnaires, throw it outside your university. It's not about like in doing this survey in your class itself, in your group of faculties, group of friends. No, beyond that. और जब भी अपना सैंपल साइज आइडेंटिफाई करो, आई थिंक 1000 इज वेरी लेस। मतलब मैं बहुत कम बता रहा हूं, कम से कम 15-20 हजार लोगों से एक फीडबैक, एक रिमार्क्स लेके आना, दैट इज अ प्रॉपर रिसर्च कि दे सेड यस, दे आर रेडी टू टेक दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी। तो वो फीडबैक और वो रिसर्च आपके लिए बहुत। और अगेन अगेन इट्स रियली इंपॉर्टेंट। आई एम टॉकिंग, और मैंने ना एक कोहर्ट लॉन्च किया एग्रीटेक के ऊपर। When I asked founders, और मैंने उनसे पूछा how exactly you had done a groundwork, they said that we had put this questions, और हमारे पास फार्मर्स ने हमें ये इंफॉर्मेशन दे दी, हमने उनके ग्राम पंचायत और प्रोबेबली द टॉप मोस्ट हियरकी ऑन दैट ग्राउंड लेवल हमने वहां से कंफर्म कर लिया। So that is incomplete research. You need to go in the fields, talk your end user, then it is going to complete your market research. आप कभी भी ना कोई भी रिसर्च खाली लिमिट नहीं है कि गूगल पे ही करी जाए, फील्ड पे ना की जाए, हमें तो गूगल ने सब कुछ दे दिया, हमें प्रेजेंटेशन बनी हुई थी, हमने आर्टिकल्स पढ़ लिए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। और वो भी मैंने आपको बताया कि कम से कम 10th पेज तक। वहां तक जाने के बाद जब आपको आइडेंटिफाई करते हो कि भाई हम यहां तक पहुंच चुके हैं, देन प्रोबेबली मुझे लगता है कि अब आपकी जो क्या कहते हैं, आपका रिसर्च कंप्लीट हुआ है। अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। नाउ जब हम आई थिंक देयर इज अ न्यू क्वेश्चन वेरी मच, व्हाट टेक्निक्स कैन हेल्प टू एनालाइज मार्केट ट्रेंड्स। जब भी हम इन टेक्निक्स की बात करते हैं, पहले तो ना एक तो आप अपने मार्केट एनालिसिस को एक स्टेप्स के अकॉर्डिंग कंडक्ट करना शुरू करें। ठीक है, यू आर नॉट गोइंग टू डिटरमाइन कि हमारे को जोहो से इंफॉर्मेशन आ गई है, या हमने कोई स्पेसिफिक इंक 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 42 पढ़ रहे हैं, या योर स्टोरी के हमने आर्टिकल्स देखे हैं, वहां पर मार्केट ट्रेंड्स आ रहे हैं कि स्टार्टअप्स कैसे बूम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। हम कोई शार्क टैंक की वो पढ़ रहे हैं, रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। You can take some insights from these reports, but you need to do it by yourself. Maybe purpose of your research, purpose to understand the market trends, understand your competition, identify target customer. So मेरे मेरे हिसाब से जितनी भी आप टेक्निक्स की बात करते हो, या आप परफॉर्म करने की बात करते हो रिसर्च को, आपको एक बेसिक स्टेप्स के बेसिस पे उनको कर लेना चाहिए। आपको कितना टाइम डिवोट करना है इस स्टडी को लेके, अपने मार्केट ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। और मुझे लगता है ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आप स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट देखोगे, इन्वेस्ट इंडिया की वेबसाइट देखोगे, और प्रोबेबली पीएमओ लॉन्च्ड एवरी टाइम एक स्टार्टअप के ऊपर एक रिपोर्ट देते हैं, वो आप देखोगे तो यू गेट एवरीथिंग, एवरी इनसाइट्स। और देयर इज नो स्पेसिफिक टेक्निक कि जहां से मैंने सिर्फ ये वाली टेक्निक लगाई है और मेरे को सब कुछ मिल गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप कौन सा डेटा आपके लिए बेनिफिशियल है, आप B2C जा रहे हो, B2B जा रहे हो, B2G जा रहे हो, D2C जा रहे हो, कितना टाइम डिवोट करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू यूज दैट डेटा।
gathering a data. So these all things required to analyze the market trends. I hope I answer your query. And very easy way, I already told you, qualitative and quantitative way to do the research. I'm happy to answer more queries if you do have. Otherwise, I am available offline. Apurva, organizers. Otherwise, we can conclude this. Sir, thank you very much for this valuable information for our students, and you sparing your valuable time for us. And we are very thankful to you that you provide your like important time for our students. And thank you very much. And Yeah. Thank you. I'm, Thank you, Apurva. yes, sir. I'm just sharing your award of appreciation. Sir, this is small token of love on behalf of City University, and I'll be sharing this certificate with you via email too. Thank you, Apurva. And next thing, I just wanted to maybe a small request. If we can do some kind of these kind of sessions offline, this gives me a more what you can say, probably to talk with the real audiences. So that I Yes, need to sir. understand the problems. Yes, sir, definitely. We'll schedule this session Sure. for our next time. Thank you so Sure. much, sir. Thank you, Apurva. Thank you, CT University, for organizing this expert talk. Thank Thank you you. to all the participants.